Good evening. I will be discussing the important concepts in this chapter of control and coordination. So, firstly, सबसे important है to understand like how the information is relayed in the body. So, our body is made up of nerves. So, nerves का जो structure होता है, it comprises of a dendritic tip, एन एक्सॉन एंड अ सेल बॉडी. तो जब इंफॉर्मेशन हमारा नर्व कुछ डिटेक्ट करता है, वो एक केमिकल इम्पल्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है. एंड दिस इम्पल्स विच इज क्रिएटेड ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्रिटिक टिप from the cell body and to the axon. From the axon, it releases it further by crossing the synapse. Synapse is basically हर nerve के बीच में जो एक gap होता है, और वो जो डेंड्रिटिक टिप जो है वहाँ पे वो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल छोड़ता है, एंड दैट केमिकल अगेन जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड दिस इज लाइक अ चेन रिएक्शन. तो हर नर्व ऐसे ही पूरे बॉडी में उसको कन्वे करता है. Next, an important concept is reflex actions. The reflex actions are your immediate actions, जिसको हम कुछ सोच के नहीं करते. तो अगर मैं कुछ बहुत गर्म छू लूँ, मैं ये सोचूंगी नहीं कि मुझे दर्द होगा. I immediately act upon it, and that is possible because of this thing called reflex arc, and these are formed in the spine. तो एसेंशियली रिफ्लेक्स आर्क का डेफिनेशन ये होता है कि जब हम प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और द इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन विच इज कंप्लीटेड क्विकली. तो हम वो डिटेक्ट करते हैं जो इनपुट है कि कुछ गर्म छू रहे हैं, एंड हम उस पर इमीडिएटली एक्ट करते हैं. आउटपुट एक्शन इज सपोज मैंने हाथ पीछे कर लिया, एंड दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इस चैप्टर में वी टॉक अबाउट ग्रोथ इन प्लांट्स. तो जब प्लांट्स ग्रो करते हैं, देर आर वेरियस ट्रिगर्स इन द इन्वायरमेंट जिसके वजह से हम प्लांट की ग्रोथ को एट्रीब्यूट करते हैं. सो देर आर इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विच चेंजेस द डायरेक्शंस दैट द प्लांट ग्रोज इन. And in directional movements को हम बोलते हैं tropic movements, and they can either be towards the stimulus or away from it. So for example, जैसे हम sunflower को देखते हैं, वो जहाँ पे sun होता है उसकी तरफ bend कर जाता है, तो that is called like phototropism. Photo is light. तो वैसे ही different तरीके के stimuli होते हैं. Now, since electrical impulses are one of the major ways of conducting information, what are their shortcomings? One is that वो उन्हीं nerves के पास जाएंगे जहाँ पे वो connection होगा, which is not possible in every nerve. Secondly, once an electrical impulse is generated and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before वो फिर से वो generate करना शुरू करे. तो एक chain, like it does not transmit continuously, there is a break. एंड सेकेंडली कि जब तुम केमिकल के थ्रू करते हो वो बहुत फास्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब प्लांट्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं, वो एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं ऑक्सिन, उसको वो रिलीज करते हैं जिसकी वजह से सेल्स कैन ग्रो लॉन्गर, एंड दैट्स अ फास्टर वे ऑफ ग्रोइंग दैन थ्रू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. अब हम ह्यूमन बॉडी के इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स पे आ जाते हैं जो कि मेजरली डिटरमाइन करते हैं हाउ वी फंक्शन. वन इज आयोडीन. आयोडीन जो होता है वो बेसिकली थायरॉयड ग्लैंड जो थायरॉक्सिन बनाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो नहीं होगा तो इंसान को गोयटर हो जाता है. बेसिकली थायरॉक्सिन का एंटायर पर्पस इज कि वो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म है वो बॉडी में बैलेंस्ड रहे. Second होता है growth hormones which are secreted by the pituitary gland which are located in the brain, and वो regulate करते हैं whether or not like how you grow. So अगर उसका deficiency होता है तो तुम dwarfism से suffer करते हैं, and अगर उसका excess होता है तो like a person becomes a giant. And next is insulin, and insulin basically pancreas secrete करते हैं जो blood sugar levels होते हैं उसको maintain करने के लिए. Lastly, the most important thing in this chapter is the human brain. तो human brain के different parts होते हैं which are responsible for various things. So the forebrain is the main thinking part, and उसमें different regions होते हैं जो specialized होते हैं for receiving signals from various receptors like hearing, smell, sight and so on. And there are separate areas of association also जहाँ पे वो जब ये receive करते हैं information उसको वो लोग put together करके interpret करते हैं. Mid और hind brain जो होता है उनका बेसिकली जो एक्शन होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड इनवॉलंटरी एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेटिंग, वॉमिटिंग. सो बेसिकली व्हेन वी सैलिवेट और व्हेन आवर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस वी डोंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर these are involuntary actions, and these are controlled by the medulla which is present in the hind brain.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द सेरिबेलम, सेरिबेलम का पॉइंट होता है टू मेंटेन योर पॉस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो जैसे हम जब साइकिल चलाते हैं, सीधी लाइन में चलते हैं, दैट रिक्वायर्स अस टू हैव एक्सट्रीम प्रिसिजन एंड एक्सट्रीम poise in our body, and that is possible through the cerebellum. So these are the important concepts in this chapter.